Welcome to JEE NEET Physics. Today's topic is torque. Okay, so torque is R cross F, where R is radius and F is force. Okay, radius is distance between center and the object. Okay, R denote by arrow red. Okay, here, and F, which is dark blue. Okay, so you see here, if इस ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है कैसे एंटी क्लॉकवाइज, सो हमारा टॉर्क कैसे होगा, आप अपने राइट हैंड को लें और फिंगर्स को वैसे ही कर्ल कराएं जैसे ये ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है रोल कर रहा है, तो फिंगर जो है वो मतलब इस साइड को जाएंगी। ओके, जो हमारी डायरेक्शन होगी काउंटर क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज़ in which direction? It is in upside. Okay, and if the object is moving clockwise, so direction of torque is what? Okay, direction of torque is downward. Okay, and L denote here is angular momentum, which is R cross P. P is linear momentum. Okay, so you can see angular momentum also in this diagram. Thank you for watching. Do like, share, subscribe.